Woo! हाँ, अमृता ने इतनी तारीफ क्यों की पता नहीं. क्योंकि मतलब अच्छा. इतनी humility. Thank you so much for your presence. Thank you so much. I'll not waste any time. And Bhushan ji, namaste. बस बजा रहा हूँ गाना भी. I think I should not waste any time and I'll straight away. We have to first play the music, right? Yes, let's do that. Yes. Okay, guys, here's Galti Se Mistake. Hi, Priyanka. क्या इसको नीचे करना है? So much. Thank you so much. As you can see, it's a fun film, fun family film, and और आज क्यों ये promotion हो रहा है? Because ट्रेलर के वक्त भी हम लोग नहीं आए, पहले गाने के वक्त में भी नहीं आए. अब से like और it was high time that हम लोग सब सामने आते because of this product we are very proud of. और light. अच्छा मेरे पे चेक करोगे? अच्छा आ रहे हैं. कल एक्सपोजर सब चेक कर. एक काला है लेकिन पूरा. ऑडियो ठीक है? सब चेक कर लो यार. बुलाऊं क्या? रेडी? कंगी हो रहा है. एंड कैटरीना कैफ प्लीज आइए. बहुत हो गया कंगी है. या मुझे ठीक से इंट्रोडक्शन वगैरह देना नहीं था. अमृता तुम करो यार. This is the shortest introduction anyone has ever done. Good afternoon, everyone. Thank you so much for being here today. मैंने दादा को बहुत प्रिपेयर किया कि ये हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है. वी वर्कड ऑन दिस फिल्म फॉर 3 years. इट्स बीन लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर बोथ ऑफ अस. बट उन्होंने हक दिया, कुछ बोला ही नहीं. आई थॉट ये कुछ अच्छा कहेंगे फिल्म के बारे में. बहुत सारे चीज़ें लिखे हुए गए हैं इस फिल्म के बारे में. जो डिले हुआ है, इतना टाइम लगा है. बट इट जस्ट रिमाइंड्स मी कि जो 3 साल पहले या 3.5 साल पहले जब दादा मेरे पास आए थे और उन्होंने ये आइडिया सुनाया था जग्गा जासूस का, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा था. एंड वी डिसाइडेड कि हम ये खुद प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज वी वुड लाइक टू मेक दिस फिल्म द वे वी वांट टू मेक इट. किसी को पता नहीं था इतना टाइम लगेगा और पता नहीं किसकी गलती है, किसी की गलती नहीं है. मैं ये नहीं कह सकता कि दादा की गलती है, प्रीतम दादा की गलती है या मेरी गलती है. आई थिंक ये सबकी गलती है क्योंकि जब दादा फिल्म बना रहे थे, दादा तो घुस गए थे इस फिल्म में. 3 साल इन्होंने कुछ नहीं किया बट हमने दूसरे फिल्में की हैं, दूसरे रोल्स निभाए. आई थिंक ही इज़ द ओनली वन हु इज़ रियली स्टूड बाय दिस फिल्म. सो आई रियली होप फॉर हिम and for his amazing heart that you guys give this film a chance and enjoy this film on the big screen. I think we can take a few. Kanan, I think you have to move. Yogi, one more mic. For. No, we have mics. Okay, you want me to move? खुश? You want to say something? Yeah. किसी जर्नलिस्ट का ट्वीट आया था आज बीच में मत बैठना. वार्निंग दिया मुझे. नहीं कुछ नहीं. It was addressed to me and Pritam. Someone's got questions for us. Bhushan sir, how are you? Welcome. We have Ravi sir also here. Actually, let's first question be from Bhushan. Music delivery कब होगी? Probably ask about the third song. Hi, Ranbir sir, this is Alok आपके लेफ्ट में. कहाँ है आलोक? हाय. आपका मैसेज मिला सुबह. अरे थैंक यू सर. सर सवाल है कि आपके एक्टिंग की बात की जाती है, बाकी चीज़ों की बात की जाती है. डांसिंग स्किल जो है आपकी, उसके बारे में काफ़ी आप भी कम बात करते हैं और रेगुलर लिखा भी कम जाता है. ज़रा उसके बारे में बताएं, अपने डांस की कैपेबिलिटी के. वेल एक्चुअली जैसे सब जानते हैं हिंदी फिल्मों में डांसिंग बहुत ज़रूरी होता है. आई थिंक एवरी एक्टर फॉर देम टू डांस एंड रियली हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैं इसकी तरह से इतना कमाल का डांसर नहीं हूँ. आई थिंक शी इज़ अमेजिंग वो तो है. द वे शी डांसेस. नॉट मैनी पीपल नो कि जब इन्होंने शीला की जवानी, चिकनी चमेली, माशाल्लाह,
कमली, ये सब बहुत उम्दा गाने किए थे। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था, क्योंकि मैं इसको रिहर्स करवाता था, एक्सप्रेशंस, वेरिएशन सब कुछ सिखाता था। देयर इज़ नो ग्रेटफुलनेस दैट यू हैव शोड अबाउट दिस एंड यू बिकम दिस। पीके आया क्या? जो भी, वो आमिर खान था। नो, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन। एंड जब हम दादा के साथ गाना करते हैं, दादा कोरियोग्राफर को तो बुलाते हैं लेकिन खुद डांस करते हैं, जस्ट टू सी हिम हैविंग सो मच फन, लाइक ऑल द स्टेप्स इन दिस सॉन्ग ऑल्सो, एवरीथिंग वाज इम्प्रोवाइज। ऐसा हमने कुछ रिहर्सल बिल्कुल किया नहीं, सेट पे जाके हमने पूरा गाना शूट कर दिया था। कतरीना, गाने की लाइन है, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। तो इस लाइन से कितना इत्तेफाक रखती हैं, और मिस्टेक करने की कोई उम्र होती है? Asking वो लिरिक्स के बारे में कुछ I think there are no, I think लिरिक्स का एक्सप्लेनेशन दीजिए दादा। गलती से मिस्टेक। मिस्टेक करने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में मिस्टेक कर सकते हैं, और कटना की उम्र में खास करके ज़्यादा। पहले आप बोलो, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? हाँ जी, कहाँ से हो? स्पॉट बॉय से, ओके। तो क्या आपका क्वेश्चन था? मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में कोई मिस्टेक्स नहीं होते, दे ओनली लर्निंग्स। दैट्स हाउ यू ग्रो एज ह्यूमन बींग्स, दैट्स हाउ यू ग्रो एज आर्टिस्ट। सो देयर इज नो मिस्टेक्स। हम सब उल्लू के पट्टे हैं। रणबीर, आपके राइट रितेश ईटीवी से, दादा के साथ दोबारा काम कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं और कैसा रहा एक्सपीरियंस? अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है। जब हम बर्फ़ी पे काम कर रहे थे, और मैं अभी ऐसे नहीं है कि अभी बर्फ़ी रिलीज़ हो गई, चल गई, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था बर्फ़ी में क्या हो रहा था। जब मैंने फिल्म एक हफ़्ते पहले देखी, मैंने बोला अरे वाह, ये क्या फिल्म बना दी दादा ने यार। तो आई थिंक जो इनका प्रोसेस है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मैं समझता हूँ, एंड आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू वर्क विद एनी अदर एक्टर। मैं ये भी कह रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट हिम टू वर्क विद एनी एक्टर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ द फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री। आई थिंक हिज नॉलेज अबाउट सिनेमा, हिज नॉलेज अबाउट एंटरटेनमेंट, अबाउट इंडिया, अबाउट engaging an audience, about music, about characters, performances, बहुत मतलब it's on a different level. So I really hope कि me and Dada can make a lot of films together. जब हमने जगह जासूस प्लान की थी, हमने एक सीक्वल भी प्लान किया था, बट जैसे ये फिल्म में मैं अपने फादर को ढूंढ रहा हूँ, जिस तरीके से ये फिल्म बन रही है, दूसरी फिल्म में मेरे पोते मुझे ढूंढेंगे। तो बट इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड आई होप ये, टू मी ही इज़ अ रियल दादा। दादा का जो हक होता है ना, ये इंसान है, ये दादा है। हाय रणबीर, फरीदुन फ्रॉम जी, आप बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी, रेखा कैसे हो खान, आप? नवभारत टाइम से। हेलो मैम। मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप लोग बार बार करना चाहेंगे? कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम चाहते हैं कि हम बार बार करने से भी पछताते नहीं हैं। जितना टाइम नहीं है कटरीना, जल्दी बोल दे। रणवीर, आप क्या कौन सी गलती है जो सी आप ये सुनना चाहेंगे कि मैं प्यार बोलूं, बट प्यार अकॉर्डिंग टू भी गलती नहीं है, तो मैं प्यार नहीं कह सकता। आई थिंक गलती सड़क पे सुसु, ये बार बार करना चाहेंगे? मजा आता है कभी कभी। चलती ट्रेन से ट्राई करना कभी। अच्छा रणबीर, एक दूसरा सवाल है कि आपने माशाल्लाह अपने करियर में बहुत वेरिएशन की फिल्में की हैं और बहुत अच्छा आप काम करते हैं। मुझे ये बताइए कि दादा जो आपके हैं, राज कपूर साहब, उनको आप कौन से ऐसे मोमेंट्स होते हैं, कौन से ऐसे पल होते हैं, जैसे अभी हम देख रहे थे तो बहुत सारा एक रिजेम्बलेंस दिख रहा था इस गाने में, उनको आप किन मौक़ों पर याद करते हैं? वो कौन से मौके हैं जो वो आपको इंस्पायर करते हैं? आई थिंक हर मौके पर मैं उनको याद करता हूँ। मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, जो 10 साल मैंने काम किया, इट्स ओनली बिकॉज ही शोड मी द वे। आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि मैं इस परिवार से हूँ, उनका पोता हूँ, एंड और यही कोशिश करता हूँ कि ही इज़ लुकिंग एट मी फ्रॉम देयर एंड ही इज़ रियली हैप्पी, ही इज़ प्राउड कि मैं उनका जो उन्होंने नाम शोहरत कमाई है, मैं वो बर्बाद नहीं कर रहा, मैं वो कायम रख रहा हूँ अपने तरीके से, अपने जहन से,
and I hope that I can continue doing some good work. Hi, Ranbir Faridun from Hi, BollywoodHungama. I spoke to Amir Khan recently, and he said that Ranbir Kapoor is setting benchmarks as an actor. Amir rarely actually praises anyone so profusely, also called you brilliant. Paresh Rawal Saab has recently said that some wonderful things about you as an actor. How do you look at this aspect that people have such expectations from you in terms of just raising the bar as far as an actor, as a performer, and most importantly, taking chances? Feels मैंने इनको बहुत सिखाया इसलिए वो correct. इसका पूरा श्रेय मैं इनको देना चाहूँगा, Katrina को. But thank you Amir sir, thank you Paresh sir. You know, these guys are stalwarts of this industry. You know, अगर हमने कुछ acting सीखी है इनसे ही सीखी है, इनकी फिल्में देख के सीखी हैं. And I hope that I don't let you down, Amir sir. You've been amazingly sweet and supportive to me in my entire career. I remember जब Bombay Bollywood release हुई थी और चली नहीं और बहुत बड़ी flop हुई थी, Amir sir कहीं travel कर रहे थे and he came straight to my house. He sat with me the entire night and he really like spoke to me, you know, about acting, about the film industry, about hits and flops. So I think his love for me is very deep, and I really appreciate that. And the fact that उनको मेरा काम पसंद है वो तो सोने पे सुहागा हो गया. And I hope I can live up to his expectations. Anurag sir, can you please tell us something about the importance of Mr. Ravi Varman? Because I think the camera work is looking outstanding in the promo. He's my second wife. और वो he's an Ravi शर्मा है, सचमुच का तो ही ना यार. So Ravi is here, and you can see it in every frame, and it's amazing. You know, when Barfi we started working, Ravi knew very less of Hindi, and it was very difficult to communicate with him. But he would understand, even if with that less knowledge, he will understand what I'm communicating more than any other cameraman who knew the Hindi language and English language, everything. So it was actually silent movie between us also during Barfi. And now I don't have to say anything. I look in the direction, he knows what I want. And what's going in my mind. I also understand what's going in his mind. It's amazing. It's very rare, you know, you find somebody as a colleague, you know, who is just, and he stood by me all this during, it was a very difficult process. You know, it was not one scheduled film. There were like schedules were break in pieces. And for a cameraman who's doing other films also to take out, and it is amazing. I'm really thankful to him. Ravi? जब भी हम लोग set पे आते थे हमेशा you would see Ravi still with a big smile. And this film had been a while in the making, so sometimes you would come on the set a little, you know, tired or not in the best of moods. There was infectious positive. always one person who is smiling behind the camera. और ये जो टाइम का भी मैं बता दूं, ये क्या है मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे अटकलें, मैं आपको बता दूं प्रोसेस क्या है इस फिल्म में ना. टाइम तो इतना ही लगता है फिल्म में, 4 साल लगता है. आप स्क्रिप्ट लिखते हैं 2-3 साल, फिर फिल्म बनाते हैं 6-7 महीने में. लेकिन हमने क्या किया, फिल्म तुरंत शुरू कर दिया बर्फी के बाद, क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म ऐसी बन पाता, क्योंकि अगर आप म्यूजिकल कर रहे हैं तो आइदर आप साउंड ट्रैक तैयार करें पूरी पिक्चर का 2 साल बैठ के, फिर उस साउंड ट्रैक पे शूट करें. हमें पता था हमने गलत गली में हम लोग जा रहे हैं, मतलब स्टेज गली में, विच इज़ ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू, यू नो, टू मेक एवरीथिंग रेडी. एंड तो हम चंक्स में करते गए उसको. सो दिस इज द प्रोसेस. आइदर हम पूरा साउंड ट्रैक रेडी करते तो हम चंक्स में पैर टुकड़ा. तो हमें सबको पता था कि ऐसा होने वाला है, इनकी 3 फिल्में होंगी, बीच बीच में ये फिल्में होंगी, मेरा भी दूसरा काम होगा. तो ये दिस वाज ऑल डन. इट्स नॉट दैट, यू नो, वी आर शॉक्ड एंड अरे ओ शिट इतना टाइम लग गया. लेकिन ये फिल्म ऐसे ही तैयार होती, क्योंकि इतने सारे म्यूजिकल, इतने सारे गाने हैं, आप पूरा तैयार करके करते तो भी इतना साल लगता. आप देखिए गाने यार मैं गिनती भूल चुका हूँ, 20 के ऊपर ही है. अमृता, फाइनली फिल्म रिलीज होने को तैयार है. मेरा सवाल आपसे है कि किस तरीके की प्लानिंग होगी अभी से लेकर के 14 जुलाई तक, क्या प्लान किया है आपने? Totally, her roj we'll be doing something, and I think Anurag is being very, very modest. The film has so many elements. In the marketing, it's almost difficult to put out everything that he's got in the film. So no one song can tell you everything about the film. No one trailer can tell you everything about the film. So we'll go for it, yeah, and we'll mount it in a big way. July is a great release date. You know, बच्चों के छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं, kids are going to college, they'll bunk college, they'll go to the theaters. That's what we want. So yeah. रणवीर, आपके राइट है. Hello. अमित फ्रॉम दैनिक जागरण. एक्टिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैरेक्टर के स्किन में कैसे आप जाते हैं या जाना चाहिए? देखिए, मैं जग्गा जासूस के बारे में बात करूँ. इसमें जो मेरा किरदार है, ही इज़ ऑफ अ यंग बॉय, यू नो, इन अ हाई स्कूल समवेयर इन सम small town. It's a fictitious town. He stammers. उसको हकलाने की आदत है. And because he stammers, he has to sing everything. He meets a friend called Tutti Frutti, who befriends him, who becomes like his father.
and he teaches him these things. He teaches him certain values. He teaches him to become really intelligent. If he feels shy in front of the world, go and sing. You can express what you have to say. And one day he disappears. So Jagga becomes a jasoos. He becomes a detective. He uses his mind to actually find and track where his stepfather's gone. And in that process, he meets Shruti, Mrs. Calamity James, who he क्यों? नहीं अभी मुझे पता चला कहानी क्या है. नहीं यही कहानी है. So I think the character was very interesting for me because I've never played a detective. I've never played somebody who stammers. I've never played somebody who I've never done a father-son story. Something which is so emotional. You've done love stories, you've done intense music, rockstar kind of films, but this was very sweet. I felt really good in my heart. Being on set, I felt good in my heart to sing Pritam songs, Dada, the kind of scenes he wrote. So I've had really an amazing time, and I hope that it comes through. I haven't seen the film, but I hope it all comes through together. है ना दादा? इस फिल्म में मतलब फादर और सन का रणवीर, इस फिल्म में जो थीम है फादर और सन की मतलब है केमिस्ट्री. आवाज नहीं आ रही सर. इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है उसकी फादर एंड सन की शायद मतलब है केमिस्ट्री. Yeah, it's a father-son story. इनके साथ भी chemistry सब. I think it's a very difficult. It's very. If you ask me now, about the film as a director and writer, if you ask me, it will not be a short answer of 5 minutes. If I have to give real sense of the whole film to you, so it's better you guys watch. Hi. नहीं तो आप तीनों से ये सवाल था कि जो फादर्स डे भी आ रहा है, तो आप तीनों ने अपने अपने फादर से क्या क्वालिटीज इम्बाइब की हैं, एक्वायर की हैं? Not to drink. Very important. No, I think family. I think family, the kind of values that your family gives you, and the kind of love that you feel for your family. I think that's very important. We all should not forget, what our parents mean to us, and whatever they've done to us, for us all our lives. Today I'm 34. I'm going to be 35. Now I am their parent. I have to take care of them. I have to make sure that they get all the happiness, all the joy, and everything that they've given me with so much of love and so much of heart. Hi, Ranbir. Ranbir, on your left. मैं two things it always echoes my mind of my father. दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? First thing, it's always. Second, what you're living for. Always remember. Purpose of life. That's it. Hi, Shubarna here. I just wanted to know, you just mentioned that, you're playing a high school. How was the transformation? Sorry? Oh. I think, sorry, I don't know who asked it, whoever there. I think family is the most important thing for anyone, and your family are the people who are there for you at all times. They're the people who, I think, instill the values that you have in you, and especially as I think, as Ranbir said, the years go on, you realize the importance of your family and how special they are. Sorry. Yeah, I'm sorry for cutting you short that day. Talking about playing a high school boy who's like half your age. So how was that, when you... Thankfully, because it's cinema, so the age is not defined. Yes, I did feel I would look very old. I tried to look the part as much as I could. But I believe that when you see the film and you see the way the film unfolds, you will not believe that, I'm not from this world or from this high school. And also, there are different logics why he's still here, what he's doing. So I think it'll be believable. Ranbir, Katrina, straight. Hi, Abhishek here. The film is all set to release on 14th. आप दोनों की chemistry बहुत अच्छी लग रही है. But there were reports earlier that आप दोनों film साथ में promote नहीं करेंगे. आज आप साथ में हैं. Could you guys just throw us some plans as to किस तरह film को promote किया जाएगा? आप दोनों साथ में करेंगे कि नहीं? I think हम सब ने बहुत मेहनत से काम किया इस film पे. We've given our time, our effort, our heart. And this is my film as much as Katrina's, as much as Dada's. ये हमारी film है. And we would like to present it in the best way possible कि audience तक ये film पहुँचे, उनको promos अच्छे लगे, उनको इस film का जो content है वो अच्छा लगना चाहिए. ऐसे नहीं कि कटरीना और मैं कुछ करेंगे या कुछ reality show में जाएंगे तो उसकी वजह से लोग सिनेमा आएंगे. Of course we'll do all of that. That we'll make sure that everybody is aware कि film आ रही है 14 जुलाई को. But जैसे हर फिल्म में प्लान होता है, इस फिल्म का भी प्लान है. हम ये महीने कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले, and then 1st July onwards we will really get into promoting the film. और since ये फिल्म 3 साल से बन रहे हैं, मैंने दादा को बात पूछा. बोलना बार-बार जरूरी है, चौथी बार बोल रहा है, मैं सुन रहा भी.
मैंने दादा को पूछा और रणबीर को भी मैंने पूछा प्लीज़ मेरा नाम भी डाल दीजिए वो प्रोड्यूसर का क्रेडिट्स में जो आते हैं ना. So until now I've not got a answer, but I'll think about it. रणबीर ऑन योर लेफ्ट यहाँ पर. हाय रणबीर, शाहरुख खान ने ट्वीट किया कि उनकी जो अपकमिंग फिल्म है जब हैरी मेट सेजल, वो नाम जो है आपने सजेस्ट नहीं किया, तो मैं आपको 5,000 रुपए क्यों दूँ. तो आपसे जानना चाहेंगे इज इट. देखिए, मैं आज सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि ये टाइटल मेरा है, मैंने दिया था. लेकिन दुख की बात ये नहीं है कि शाहरुख सर मुझे इसका क्रेडिट नहीं दे रहे. दुख की बात ये है कि मुझे इस रिवॉर्ड के बारे में बिल्कुल पता नहीं था. तो शाहरुख सर, मैं मन्नत आ रहा हूँ 5,000 रुपया लेने के लिए, कैश प्लीज़. बट टू बी ऑनेस्ट, यू नो, मैं महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था और उधर इम्तियाज़, शाहरुख सर एंड अनुष्का शूट कर रहे थे. तो हम सिर्फ वैन में बैठे थे, वी आर डिस्कसिंग टाइटल्स. तो मैंने ये टाइटल सजेस्ट किया, सब हंसे मेरे पे और बोला बहुत बकवास टाइटल है, एंड दे लाफ्ड एट मी एंड ऑल. कट टू आज उनका पोस्टर रिलीज़ हुआ विद माई टाइटल. सो बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस फिल्म का. बट टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ बाई फार द मोस्ट एक्साइटिंग एक्टर डायरेक्टर डुओ फॉर मी. To see Shahrukh sir and Imtiaz together was my dream as a fan, as an audience. You know, Imtiaz sir is coming back with Pritam also in this film. There's Anushka in this film. So I'm really looking forward to it. And I'm really happy that, you know, and I've also got a little part to play in this film now. Okay. कटरीना, हाय कटरीना, कैसा रहा एक्सपीरियंस एक बार फिर से रणबीर कपूर के साथ में शूट करने का? How was experience with? कैसा रहा? सब लोग एक साथ. कटरीना, यहाँ कैसा रहा एक्सपीरियंस एक बार फिर से रणबीर कपूर के साथ में शूट करने का, जग्गा जासूस? साहिब फिर से पूछिए. ये हमेशा मुझसे कहती थी कि मैंने तुझे 2 सुपरहिट दिए हैं, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति. बोलते रहती थी, मतलब while we were working the film only, you know, तो आज कुछ भी है मेरी वजह से, बिकॉज आई वॉज इन अजब प्रेम की गजब कहानी, आई वॉज इन राजनीति. फिल्म की ओपनिंग मेरे वजह से हुई. सो आई फेल्ट कि जब मैं पहली बार प्रोड्यूसर बनूँ, आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ, यू नो, बी ग्रेटफुल एंड पे बैक ऑल दैट कटरीना हैज़ डन फॉर मी. एंड आई प्रॉमिस था कि मैं तेरे लिए भी एक सुपरहिट बनाऊंगा. सो दिस फिल्म me and Dada have made only for you. And let me tell you, okay, she is amazing in this film. She's unbelievable what she's done, and we're really proud that you know, this is going to be Katrina Kaif's best performance. आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए. आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं भूल गया. कहाँ से हो आप? स्पॉट बॉय से निकिता का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन था आपका? नहीं पागल है. I mean, ये सुपर हिट की मशीन है. आई थिंक एवरी फिल्म ऑफ अस इज अ सुपर हिट, एंड यू नो, वी यूज्ड टू जोक कि, यू नो, शी शुड जस्ट टच द फिल्म और हमारी फिल्म भी सुपर हिट हो जाए. बट नो, आई फील के आई डोंट थिंक there has been a greater star than Katrina in the film industry. You know, every generation, every decade, there is a new superstar that comes, and I think Katrina's achievements have been really unbelievable what she's achieved, and I hope that she can double it, you know, in these next 10 years. Sorry, sir. Sorry, I just wanted to answer. आप तारीफ हो गई, अभी ज़्यादा उंगली मत कर. Thank you very much. Yeah, the whole struggle in our mind was this film should be better than Barfi. I was not thinking it should work or not work. The film what we are making should be better than the last film. This was what was going in everybody's mind, Ravi's mind. Ravi wanted to better his work than Barfi. This is what, because बस यही कोशिश थी. अभी कितना सफल हुए आप लोग बताएंगे. लेकिन अब all throughout the shoot, this was going in our mind that his performance, the overall experience of watching the cinema should be better than Barfi, which was a big struggle for us actually, how to better Barfi. रणवीर, मेरा सवाल, रणवीर एंड कटरीना, आपके राइट में, आपके राइट. No, I think that's something which is just incidental. Like I can't say it again, because Dada said I said it 4 times. But there was a certain film which was in the making for a long time, that one, and yeah. So sometimes delays happen. It's not a planned thing. But in this case, I really do think that, as Dada said, this was the only process to make this film. And although we don't know what will happen, you know, at the box office, one thing that I'm sure of is when people see the film, they will unanimously agree that they will understand why this was the process it had to be and why it took so long. रणवीर एंड कटरीना, आपके राइट में. मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं दैनिक जागरण डिजिटल से हूँ.
मेरा सवाल है कि आप दोनों ने बचपन में कभी किसी की जासूसी किया या रियल लाइफ में आप में जासूसी वाले कोई क्वालिटी हैं? हाँ है. Actually, what happened is because the film was being made in parts, कभी-कभी I would come to know that नहीं दादा shooting in Film City. So किसके साथ? रणबीर के साथ. मैं नहीं हूँ. मतलब दादा. So I would call Dada, what are you shooting? Or I'd ask one of the 80s, Dada, what are you shooting? So there was for me a lot of jasusi happening on this film because I think both of us wanted to be so much in the film and every frame because he was making it so well. So that was my jasusi on this film. And Ranbir is the biggest jasoos of the industry. कहाँ क्या हो रहा है सब पता है. Hi Ranbir, Bhavna from Z News this side. Hi, How are Bhavna. you? Very good. I'm feeling as if I'm talking to young Sanjay Dutt. You look so different. You have a great lineup of films, Jagga Jasoos and Sanjay Dutt biopic, then Ayan superhero film. How do you feel about your upcoming projects? You feel fulfilled? You feel content that you're doing? I feel extremely blessed and grateful. Last couple of years weren't really good for me at the box office. But still, to have a film with Anurag Basu, Rajkumar Hirani, and Ayan Mukherjee, I feel safe. I feel that they're, putting their vision, they're gifting it to me, and I really hope that I can kind of repay that, with my talent, with good performances. I'm feeling very grateful, and I'm really excited about my lineup of films. Great, all the best. देखिए मैं बताऊं इसकी फिल्म कहाँ से पैदा उसी से पता लग जाए कि मेरे दोनों बच्चे ना बड़े हो रहे थे और मुझे लग रहा था इनके लिए फिल्में नहीं है. मैं कैसे इनके लिए फिल्म बताऊँ, कौन सी फिल्म दिखाऊँ मैं अपनी? गैंगस्टर नहीं दिखा सकता उन्हें. बर्फी ठीक है, बर्फी में लेकिन थोड़ा सा लव ट्रायंगल, लेकिन ठीक. मेरी छोटी बच्ची जब बर्फी से बाहर निकल के आई थी ना, सब बहुत खुश थे, हक कर रहे थे. एंड आई लुक्ड एट हर, तो शी सेड इट्स ओके, शी सेड लाइक दैट. तो मैं बोला यार सही में, मतलब देयर शुड बी सम फिल्म इन विल ग्रो अप आफ्टर 3 years. तो मैं सही में चाहता था कि मैं एज ए पेरेंट, मैं जब गर्मी की छुट्टी होता है ना, मैं सिर्फ उनको हॉलीवुड की फिल्में दिखाता हूँ और लेके जाता हूँ थिएटर में दिखाने के लिए. तो हिंदी फिल्में होती नहीं. आई जस्ट रियलाइज आई शुड मेक ए फिल्म फॉर माई किड्स, फॉर फैमिली, फॉर पेरेंट्स लाइक मी हु हैव फैमिली हु कैन गो विद किड्स एंड वॉच मूवी. तो मन में बस यही था. तो फिल्में होती नहीं हमारे यहाँ से. अनुराग के आगे भी आप तो ये सारे जो बचपन के जो मेरे एडवेंचर जो मैंने देखे हैं, जो मतलब बचपन में जिस तरह से आई यूज्ड टू लव इंडियाना जोन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एडवेंचर, मुझे वैसा कुछ करना चाहिए एंड अपने तरीके से. अनुराग, क्योंकि आपने चिल्ड्रन फिल्म की बात की है, तो हिंदी में चिल्ड्रन फिल्म्स बहुत कम बनती हैं, तो माना चाहे आगे आपकी फिल्में चिल्ड्रन स्पेस ज़्यादा होंगी? ये डिपेंड करता है, क्योंकि अक्सर ये इंडस्ट्री में नॉर्म है कि सिर्फ आप मतलब एक एज कैटेगराइज कर देते हैं कि आप 20 to 35 बनाइए, उनके लिए ही बनाए पिक्चर है. तो लेकिन मुझे लगता है, मैं सिंसियरली फील करता हूँ कि एक परिवार, फैमिली ऑडियंस के लिए और सबके लिए, और मुझे इसको मैं किसी कैटेगरी में डालना नहीं चाहता. और फिल्म ऐसे बनी है कि सब एंजॉय करेंगे, आप देख ही रहे हैं. और लेकिन बच्चे भी एंजॉय करने चाहिए. मतलब कई बार होते पिक्चर बड़ों की होती है, बच्चे एंजॉय नहीं करते हैं. सो अगर वी सम व्हाट आई थिंक बर्फी में वो सक्सेस पा चुके, तो 8 to 80 का जो ब्रैकेट है ना, पूरा फिल्म बनाए जो सबको सही लगे. तो वही कोशिश इसमें भी है कि आप कर सके. मुश्किल बहुत है करना ऐसा. मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने बाहुबली बनाई है? नहीं यार, बाहुबली आई थिंक इट्स मतलब अभी कुछ नहीं. मुझे लगता है कि कुछ भी बोला ना अभी इज नॉट बीइंग मॉडेस्ट. आप फिल्म के बारे में रिलीज के पहले बोलना और कैसी बनाई है, आई थिंक इस वल्गर, खुद ही अपनी फिल्मों की तारीफ करते रहो, कैसे कर सकता है आदमी? मतलब आई थिंक इसे कंटेंट इज देयर, और कंटेंट आप तक पहुंचेगा, ट्रेलर के थ्रू जाएगा, आप लोग देखेंगे, और आप चीट नहीं कर सकते ऑडियंस को. आई थिंक उन लोग समझ जाते हैं कहीं पे फिल्म अच्छी है बुरी है. आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल कम एंड सी. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड. रणबीर इधर मैं, this is Nandeep from DNA. So I wanted to ask you that your last film, Adil Mushkil, despite a clash, did exceedingly well. You were talking about box office numbers. This film was supposed to clash with 3 other films, but all of them have moved, and you have a standalone release. So are you happy? And what do you think of the course, I think any film that clashes, they kind of lose some part of the business. But I also come from the school of thought that a good film, the audience will come, irrespective if it's clashed with however big a film it is. So agar aapki film achhi hai, people will talk about it, it'll spread, a good positive word of mouth will spread and people will come and see it. But I mean, it's a good sign, that the other films have moved. I think we should send them thank you notes, that only our film will be running that week. Yeah, so I'm very happy.
Katrina? रणबीर इधर मेरा प्रश्न आपसे ये है, मैं सोमा घोष दिस साइड, हाँ, कि आपने बहुत सारी अलग अलग तरह की फिल्में की हैं और ये फिल्म बाकी सभी फिल्मों से कितनी खास है और कितनी अलग है आपके लिए? खास ये है कि I'll be honest to you, it's a little bit of a superficial thing, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आ रहा था तो ऑफ कोर्स सपने होते थे कि मैं मेरा पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, क्रिटिक्स मेरा काम पसंद करेंगे, ऑडियंस पसंद करेंगे, बट हमेशा आई हैड दिस डिज़ायर कि मुझे एक बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीतना है, एंड आई डोंट, और इसका श्रेय तो मैं कुछ नहीं ले सकता, मैं सब इसके शोल्डर पे डाल के यही जीत सकता हूँ, बिकॉज दिस एंटायर फिल्म हैज़ मेड फ्रॉम हिम, बट इट्स ऑलवेज बीन माई ड्रीम. So I think with this film, I really hope that we can achieve that. I'm putting the energy out in the universe. Let's win Best Picture this year for Jagga Jasoos. Ranbir, Katrina, hi, take the last question and Katrina, wrap up, please. yeah, hi. This is Priyanka This from is Indian Pia Express. from India Today. Yeah, towards Straight, your yeah. right. Okay. So this is a little We'll take both questions. Let's take yours first. Okay, so this is a little offbeat. Very recently, a lot of actresses on social media are being body shamed, either for their complexion or for the dresses that they wear, be it Priyanka Chopra, Deepika Padukone, and more recently, Fatima Sana Sheikh has been, receiving a lot of flack for, wearing a swimsuit during the month of Ramzan. How do you, as an actress, handle, online trolls, and do you think this is very unfair for an actress? Honestly, I think my take on social media is you should take the positivity, accept people's opinions, and just avoid the criticism or avoid the negativity. That's honestly the simplest way that I go about it, and I think that's just what you need to do. You're on it, I think, for the interaction with the people who are your well-wishers, who are your supporters. Sometimes you get good feedback, good information, and that's what I think you need to pay attention to. You don't need to pay attention to any of the negativity or the criticisms. Ranbir, Thank hi. you. Last question. This is Priyanka from Indian Express Online. So talking about clash, earlier your film, Dutt and Tigers and I were supposed to clash, but now it's moved to March 2018. Do you think when you do something like that, when you push a film's release date, it sends out a perception that you guys are not that confident about the product? Well, I don't think so. I think a film has its own destiny. When a film is ready, you should put it out. You should put out the best version of the film. I've never played a part in when the film should release, it should clash with something, come on a holiday. Of course, Tiger Zinda is the biggest film of Indian cinema coming this year. And I'm sure the producers had really had, good meetings and understood logistics, understood budgets, understood how much this film can earn, cannot earn. And they've taken this wise decision. But I have nothing to play in this. I come in, my role is of an actor. I've been told that now the film could come in March, it's not coming in December, and that's fine for me. As long as the film is good, as long as they're doing the best that they can, I'm happy with that. No, I wish I had, but I don't have a cameo. I wish I had a cameo in that film. Yeah, let's take that last question. Yeah. Okay, we'll take yours also. Sorry, ma'am, I can't hear what you're saying. So my stand is I'm not on social media because I believe that it affects your mind, it affects your purpose. I don't know. Do you think A, B, look for honey, not a fly, look for filth. Avoid. Best question. Thank you so much. Thank you. I just before I just really wanted to introduce. No. See, Ravi has been saying just 2 seconds. The pillar behind the music. The first pillar is Pritam, of course. अच्छा अभी कुछ सुनेंगे. Bhushan ji, please आइए. Ravi, please come on stage.